British Parliament passed Regulating Act 1773. Madras Bombay Presidency came under the Kolkata Presidency. Governor of Bengal को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया. वारन हेस्टिंग इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था. और ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. और 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ. कोलकाता में चीफ जस्टिस और 3 जज था. फर्स्ट जज इलिजा इम्पे 1774 में इस्टेब्लिश हुआ. रॉबर्ट चैम्बर्स और ली मैस्टर और जॉन हाइड इसका 3 और जज जो थे वो. इन 1786 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ अमेंडिंग मेजर गवर्नर जनरल को फिर सेपरेशन ऑफ पावर. फिर आया चार्टर एक्ट 1833 वो जो 20 साल के लिए कंपनी को ग्रांट करता था. वो चार्टर एक्ट 1833 में सब कुछ को ख़त्म कर दिया. मर्केंटाइल सीज टू बी मर्केंटाइल कॉरपोरेशन जो पॉलिटिकल वर्क को. बाय द एक्ट गवर्नर जनरल बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. लॉ मेंबर ऐड किया 4 मेंबर टू द गवर्नर जनरल. लॉ इसको मैकाले बिकम द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल. बाय चार्टर एक्ट 1853 बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डिसाइडेड बाय द क्राउन बाय वारंट. नंबर ऑफ डायरेक्टर 18 से 24 से 18 कर दिया. 6 आउट ऑफ दोज नॉमिनेटेड बाय क्राउन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आने लगा. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट टू इशू ऑर्डिनेंस इमरजेंसी पीरियड. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया 6 मंथ. लॉर्ड कैनिंग स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम. डिपार्टमेंट टू द अदर हिज काउंसिल. मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्टेड टू हेल्ड टुगेदर इन इंडिया और इंग्लैंड 1922 में. एचिसन कमीशन रिपोर्ट 1857. इंडियन सिविल सर्विस नॉट हेल्ड इन इंडिया इंग्लैंड टुगेदर. 20 अगस्त 17 को मॉन्टेगू डिक्लेरेशन. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेगू. रिपोर्ट वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. डायरकी एक्ट प्रोविंस मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म. कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं. रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर के पास रिजर्व सब्जेक्ट लुक्ड बाय द गवर्नर इन काउंसिल. 1926 में इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंस्टिट्यूटेड. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. वाइसराय एक्सपेंडेड एडिशनल मेंबर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12. नॉमिनेटेड वाइसराय हैड अ टेन्योर 2 ईयर. इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज इन टू एस्पेक्ट. बजट राइट टू डिस्कस बजट लेकिन वोट करने का नहीं दिया था. एडवांस नोटिस ऑफ 6 डे. अलाउड टू आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट. इंडियन काउंसिल 1909. शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन. रामसे मैकडोनाल्ड. डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी के बीच में. मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट दिया 1918 में. इंडियन सिविल सर्विस साइमल्टेनियसली. गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 35 एक्ट. पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया. सिविल सर्विस यूके में स्टार्टेड देयर एग्जाम सेपरेटली. 1950 में फेडरल पब्लिक सर्विस रीनेम्ड यूपीएससी. बाय दिस डायरकी एट प्रोविंस abolished डायरकी एट सेंटर इंट्रोड्यूस. प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन. डायरकी एट सेंटर. ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस वाज रीस्टोर्ड एंड डायरकी प्रोविंस में एबोलिश कर दिया. बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविजन. एस्टेब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट. जवाहरलाल नेहरू मशीन कार विथ स्ट्रोक ब्रेक आउट नो इंजन. He was the Prime Minister 47 से 64. 5 Principal Peaceful Coexistence. पंचशील. नैम
लखनऊ सेशन, एड्रेस टू लखनऊ सेशन 36, रिजेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 14 पार्ट 321, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 में रेगुलेटिंग एक्ट 7073 में फर्स्ट टाइम प्रोविजन मेड फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पिट्स इंडिया एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 7073 सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट 7073 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता 7073 रेगुलेटिंग एक्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलीजा MP राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ कमिटी टू गवर्नर जनरल एक्ट ऑफ 7086 एक्ट empowered Lord Cornwallis to overrule the decision of his council act of 7086 regulating at 1793 the district collector was deprived his judicial power and made the collecting agent only. The reason for such regulation, Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश्ड इन 1813। ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना 13। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एबॉलिश्ड बाय 1813। रिलेशन चार्टर एक्ट 1813। The act abolished the trade monopoly of East India Company including its tea and trade. Charter Act 1813 Financial allocation for the education of Indian people. Not made in Charter Act. All India an Indian was to be appointed law member of General Council. नहीं, ये 13 में हुआ था, 13 में। East India Company were abolished. Designation of supreme authority was the change Governor General of India in Council. All member power to be conferred on Governor General in Council. Governor General of Bengal designated as the Governor General of India. Charter Act 1833 recommended to hold Indian civil service examination simultaneously in India and England. Montagu Chelmsford reform. Competitive exam system 1853 first time created functioning legislative council in India. Charter Act of 1853 British government finally agreed to hold ICS examination simultaneously in India and England 1922 Government of India Act 1919 provided for separate examination for the ICS which was to be held in India. ICS 41% of Indians was more as compared to the Europeans. Establishment of Board of Control. East India Act establishment of Supreme Court regulating at 77 permission of appointment of Christian missionaries in India और Charter Act 1813 law member of in Governor General Council 1833 Charter Act 1813 company trade monopoly in India was ended. Regulating Act 7073 the power of governor was transferred from East India Company to British Crown. Act ये है एक्ट ऑफ 1858 का। रेगुलेटिंग एक्ट 70 कंपनी डायरेक्टर्स वेर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू ब्रिटिश government all correspond and the document pertaining to administration of the trade of the company. East India Act set up Board of Control in Britain to fully regulate the East India. Under which Act Board of Control was established? East India Act 1784 by which Act British government abolished the monopoly of East India Company on trading of tea and sugar.
1813 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट मोनोपोली ऑफ टी एंड ट्रेड बाई 33 से वो भी ख़त्म कर दिया था। Entire area of present UP was separated from Bengal Presidency, placed under Agra Presidency 1834. Act transferred the Government of India from East India Company to Crown. Government of India Act 35. Charter Act 1853 abolished East India Company monopoly of India trade. 33 है। Government of India Act 58. British Parliament abolished East India Company altogether and undertook the responsibility of ruling India directly. Act empowered Governor General of India to issue ordinance ICA 8061. British India strengthened the Viceroy authority over the Executive Council by substituting portfolio for departmental system for corporate functioning. 1892. ICA 8061. Empowered Indian Legislative Assembly to make discussion on a budget. ICA 1892. British for the first time introduced the system of indirect election in India. 1892. Act were passed 3567 to control the media in India. 3567 78 1908. High Court established in Bombay, Madras and Calcutta. 1861. Most short-lived of all Britain's constitutional experiment in India was Indian Council Act of 1909, which act provided the communal representation in British India. Parliamentary reform 1909. Separate electorate system in India. Indian Council Act 1909. Declaration of Reform on August 20, 1917 is known as Montagu Declaration. Father of Diarchy, Sir Lionel Curtis. Montagu Chelmsford Report formed the basis of Indian Government of India Act 1919. Prime Minister of England Montagu Chelmsford Act was passed in 1919. Lloyd George. Constitutional document was the hierarchy system introduced in Indian province 1919. Context of Indian history. The principle of diarchy refers to division of the subject delegated to the province into two categories. Montagu Chelmsford proposal were related to social reform and constitutional reform. Government of India Act 1919 clearly defined the jurisdiction of central and provincial government. Principle of diarchy was introduced by Act 1919. Government of India Act 1919 इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म नहीं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं इसको। एक्ट सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 केम इनटू फोर्स इन 1921. मॉन्टेगू वाज सेक्रेटरी और चेम्सफोर्ड वाज वाइसरॉय. The large party of authority was delegated to province. Diarchy means division of administrative affairs into two sections. It was introduced in enforcement of responsible government in province. Post of Indian High Commissioner was created by the Government of India Act 1919. Government of India Act 1935. Provision of federation and provincial autonomy. Which among the following introduced the provincial autonomy in British India? Government of India Act 1935. Baseline of the Government of India Act 1935. Simon Commission. Some of the main features of the Government of India Act 1935.
Abolition of diarchy in the governor's province. The power of governors to veto legislative action and to legislate on their own. Government of India Act 1935 abolished provincial diarchy. Not one feature of Government of India Act 1930 appraisal of provincial है, proposal of federation, reconstruction of governor general executive, appraisal of the act नहीं. In Government of India Act 1935 provided for provincial autonomy, establishment federal court, all India federation at the center. Government of India Act 1935 important, it is main source of Indian constitution. Not feature of Government of India Act 1935 डायरकी एट सेंटर एज वेल एज प्रोविंस. सेंटर में था, प्रोविंस का ख़त्म किया. रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रोपोज बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1935 to use princes to counterbalance the anti-imperialist doctrine of the nationalist leader. Act 35. A car which has a brake but no engine. Jawaharlal Nehru. About the Jawaharlal, we were provided with a car with 35 को बोले थे. Principle of constitutional autocracy. Government of India Act 1935. Indian National Congress had rejected Government of India Act 1935. लखनऊ सेशन 36 में. Central Legislative Assembly were held under the Government of India Act 1919. 23, 26, 30, 34, 35 election of Central Legislative Assembly. Provincial Assembly election 37 held under the Government of India Act 1935. Last election of India legislature under the Government of India Act 1935. 1945 का इलेक्शन 23, 26, 30, 34, 45. Government of India Act 1935 Charter of Slavery. Jawaharlal Nehru. Instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as DPSP. Federation established the Government of India Act 1935. Residuary power were given to the Governor General. Following Act, Indian Council abolished Government of India Act 1935. I have not to beg pardon in connection with the allegation that in the draft of Constitution, a major part of Government of India Act 1935 has again been reproduced. B.R. Ambedkar. Can you show me on free country where there are separate electorate? British element is gone, but they have left mischief behind. Who among the following said the above mentioned statement in the Constituent Assembly debate? Sardar Vallabhbhai Patel. Regulating Act 1773 establishment of Supreme Court. Indian Council Act 1909 introduction of communal electorate. Government of India Act 1919 introduction of diarchy. Government of India Act provincial autonomy. Not landmark in the development of constitutional during the British rule. 55 civil right of protect civil right 55. Modern history miscellaneous.